संशोधन अधिनियम 2002-2003 10 द्वारा संशोधित की गई थी। आज बिल के माध्यम से संविधान संशोधन करके त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डारलोग समुदाय को शामिल किया जा रहा है। इससे डारलोग जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। महोदय, आरक्षण हम आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इससे हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन हम तो दो तरफ लड़ना पड़ता है, हमें दोनों तरफ लड़ना पड़ता है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पहले तो संविधान से मिले अधिकारों का लाभ लेने के लिए और दूसरा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यहाँ तो कभी भी आरक्षण समाप्त करने की बात शुरू की जाती है। महोदय, हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं। 35% लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी कर रहे हैं। सभापति महोदय, 74% लोग बेहद गरीब हैं। 86% आदिवासी की आमदनी 50,000 से भी कम है और आजकल तो वह भी नहीं मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया, उसका गठन भी नहीं हो रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है। 2020 में आदिवासियों पर 9.3% आरक्षण बढ़ा। आरक्षण के 96% केस तो न्यायालय में लंबित है। महोदय, आदिवासी के लिए बनी योजना पर आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं किया जाता, कैसे आदिवासियों को लाभ मिल पाएगा? अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदिवासियों के विकास के लिए कुल 89,265 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन जनजाति कार्य मंत्रालय को उसमें से केवल 8,451 करोड़ रुपए यानी लगभग 9% ही दिया गया। आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा मिला उसका 10% भी उन पर खर्च नहीं हुआ। 90% पैसा ऐसे योजना पर खर्च किया जा रहा है जो सबके लिए योजनाएं बनी होती हैं। महोदय, बिल के वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि संभावित अतिरिक्त व्यय का एस्टीमेट लगाना संभव नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यय होगा तो उसे अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अंतर समायोजित किया जाएगा। महोदय, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई परिजन आता है, तो हम सोचते हैं कि एक कटोरी चावल ज़्यादा डालें ताकि उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी खाना खिलाना है। उस आधार पर मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि डारलोग जनजाति को जोड़ा जा रहा है तो त्रिपुरा को अतिरिक्त धनराशि पहले ही मुहैया करानी चाहिए। हमेशा कहती हूँ कि देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय को आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी दी जाए। सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान दी जाए। महोदय, आज त्रिपुरा की डारलोग जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया
और सवर जनजाति को अनुच्छेद 342 में अधिसूचित करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 13 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध को अप्रूव कर दिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सोरिया, भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया, धागड़, बिड़िया, गदवा, गोद, कोड़ाकू, पंडो, भारिया और गोंड आदि समुदाय को भी जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से दिनांक 15 अक्टूबर 2020, 8 फरवरी 2021 और 6 दिसंबर 2021 को पुनः पत्राचार किए। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति में महार जाति को भी जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सभी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, डार्लोंग को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए 2016 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। चूँकि एक साल बाद मार्च 2023 में त्रिपुरा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो सरकार को वहाँ के आदिवासियों को याद आ गई है और इस बिल पर सदन में चर्चा के लिए लाया गया। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दिसंबर 2023 में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। आदिवासियों को न्याय मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगी, आपकी अनुमति। समय 1 घंटे का ही है। अतः बिल का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करती हूँ कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भेजे गए प्रस्ताव पर भी शीघ्र विचार करें और सदन में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिससे मुख्यधारा से छूट चुके राज्यों का आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इसी तरह बिहार का भी, जहाँ पे गोंड है, जो अंग्रेजी से उच्चारण करके हिंदी में लिखा जाता है, उसके चलते छोटा छोटा जो हलंत है, उच्चारण है, उसके चलते जातियों में जो परेशानी आई है उसको सुधारा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मानिक शाह जी ने प्लीज, श्री मानिक शाह जी प्लीज, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लीज, अब रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, प्लीज मिस्टर मानिक शाह जी प्लीज, जी प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी अब, प्लीज जी प्लीज। जो समय है उससे अधिक मैं नहीं दे सकता, आप ज्यादा बोल चुकी हैं, प्लीज। I support the bill to amend the Constitution, Scheduled Tribes Order 1950 for inclusion of certain, that is Darlong communities in the list of Scheduled Tribes of Tripura State. Adhyaksh Mahoday, for a long time regarding this inclusion of this Darlong community in the list of Scheduled Tribes were pending. I want to tell you that in 2002, from the Tribal Welfare Department, Government of Tripura, they have one memorandum for Council of Ministers, and they have sent this memorandum to the Government of India. They have written that inclusion of Darlong tribe as a separate sub-tribes in the list of Kuki communities, in the list of Scheduled Tribes of Tripura. So nothing was done during that time. So a committee was formed by the then government of Tripura for inclusion of the Darlong. But that was sent to the government of India in 2003. But there was no response from the government of India. So it is only our Honorable Chief Minister, Sri Biplab Kumar Dev, who has written a letter to the government of India. And this Darlong community were deprived for a long time, what I said earlier. Now it has come into reality because of this bill. There are 19 tribal communities in Tripura state, and they are namely Tripuri,
Dev Burma, then Riang, Bruce, Jamatia, Nuatia, Uchai, Chakma, Mok, Lushai, Kuki, Munda, Onam, Sautal, Bhutia, Halam, Lepcha, Garo, etc. So, Darlong is a tribal community of Tripura which has a population of only 11,000. Although the population is very thin, but the community has high prevalence of education and cultural activities. The members of this community serve in senior position in the local administration, in army and paramilitary forces, etc. One example with the cultural activity of this community is a tribal musicologist. You might have heard the Roshan tribal instrument. This master, Thanga Darlong, was awarded the prestigious Padma Shri a few years ago for his contribution in culture. So he belongs to this Darlong community. The bill would be justice to the Darlong community. In view of this bill, the living condition of the Darlong community would be good as well as in education, health, etc. It is a reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Prayas of our Honorable Prime Minister Modi ji. This is the motto of BJP-led central government. Central government led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is working for the development of everyone. And this is the direct reflection. Therefore, I thank Honorable Minister Sri Narendra Modi ji and Union Tribal Welfare Minister Sri Arjun Munda ji for this historical bill. Again, I support the bill. Thank you. Thank you. Dr. Santanu Sen ji. Thank you, sir. Sir, in reality, it's very painful to see the Dalits getting mob lynched. And it's even more painful to see that the union ministers taking food from seven-star hotels to their houses and sitting there and eating there just to catch votes, and then once again started ignoring them. Sir, it's very unfortunate. Sir, Article 342 of Indian Constitution speaks about scheduled tribes. India has 427 tribal communities, of which 130 major categories are from Northeast Indian, sir. Sir, if we count the sub-tribes, it comes to around 300. Sir, 9% of total Indian population belong to them, and unfortunately 92% of them, they stay in the remote villages without having any proper access to health, education, transport, drinking water, etc. Sir, so far the Tripura is concerned, incidentally and fortunately I get the opportunity to visit that double engine run Tripura for several purposes, including political purposes. And in true sense, I can get the opportunity to experience how miserable the situation is so far the lifestyle of these tribals are concerned. Sir, 1/3 population of the total Tripura, they belong to scheduled tribe. 19 tribes are there. I must say my previous speaker, who happens to be the state BJP president of Tripura, they are not at all concerned about these tribes. They have never fulfilled their pre-poll policies, and that's why our Supremo, Madam Mamata Banerjee, became so much concerned. My humble submission, if you cannot fulfill your pre-poll promises, give it to us, we will be going to fulfill it. Sir, report of Tripura Tribal Area Autonomous District Council says, sir, infant mortality rate, maximum in Dhalai district, due to poor knowledge about breastfeeding. Maternal mortality rate, extremely high, because of lack of knowledge about health, hygiene and malnutrition, and still, even today, the rate of institutional delivery is less, so far the tribal communities are concerned. Other health issues they are suffering from: goiter, pellagra, anemia, beriberi, vitamin deficiency and sexually transmitted diseases including HIV. Sir, so far the education is concerned,
more than 20% school dropout cases are there. There is still gender inequality existence. Sir, so far the gross enrollment ratio is concerned, when the national average is 26.3%, in Tripura for SC it is 23% and ST for 17%. Sir, because of poor literacy, major tribals of Tripura could not register themselves under Tripura Land and Land Revenue Act 1960. That's why they are still considered as encroachers, most unfortunately. Sir, even during this post-COVID employment for generation, the budget was decreased. For SC, it was earlier 171 crores, it has come down to 23 crores. For ST, it was 89 crores, it has come down to 11 crores. Sir, budget for labor welfare scheme also has been slashed down like anything. My previous speaker is being requested by me, please come down to our state of West Bengal. Just see what we have done. So for the literacy in West Bengal, in ST is concerned, national average, ST, national average 68% male. In our state, ST 74% males are educated. In female, 49% in Tripura, 51% in our state of West Bengal, sir. Sir, Oikosri project to promote education, post-matric scholarship to promote education, Oasis scholarship to promote education, Jai Jawahar pension scheme 2022, 1,000 rupees per month, free electricity up to 75 units in 3 months, and dedicated advisory council. So instead of using this marginalized section of the society for political purpose, Government of India must take up this issue seriously, and my final submission will be, as this proposed bill seeks to amend the ST list to include Darlam community as a sub-tribe of Kuki, which will enable to get them the benefit of reservation, I sincerely urge all of you to support this bill. And my request to my previous speaker, please give the opportunity to us. Thank you. Manisri M. Muhammad Abdullah. Thank you. Honorable Chairman, sir, thanks for the opportunity given to me to speak on this August House on the bill, namely the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022, which includes the Darlang community in the list of STs in Tripura. I really welcome this bill deal with social engineering, since it will try to include some of the people of this country who are marginalized, and even now, due to hierarchical social system based on the underlying notions of purity and pollution, which further denies mass participation in the development of the nation. Sir, we should note here that even after 72 years since we framed our constitution, we are still identifying the marginalized communities to be added under scheduled caste and scheduled tribes from each state. I'm also sure that it will continue. Sir, not only in Tripura, we are yet to do this social engineering exercise across the nation. Sir, I would like to remember this August House that in 2016, our beloved leader and ex-chief minister, Dr. Kalaignar, requested to Honorable Prime Minister to include the fisherman community also in scheduled tribes list. And yet it has been a standing demand for a long time, sir. I think only in Karnataka it has been included, other area it has not been included. Even the Mandal Commission report on backward classes and set certain sections of occupational communities like the fishermen and Banjaras will still suffering from the stigma of untouchability, and has suggested that these castes to be considered for inclusion in the list of scheduled tribes, sir. Apart from this, M.S. Swaminathan committee had also recommended the considering the separate legislation on the line of the scheduled tribes for recognizing the traditional rights and fishing occupation of the fisherman community. Not only those who lives in forest and is nearby rural area, but also the 90% of the fishermen involved in small-scale fisheries are often the poorest and most politically, socially marginalized. In general, fishing is considered a very dangerous occupation. Hence, the fishermen community, by their very geographical nature, in socially and educationally akin to the scheduled tribes. Their inclusion in ST list, which they deserve in all respect, would enable them to climb up the ladder of the life. Thank you. Hence, I request the Honorable Union Government to intervene in this matter and expedite the inclusion of fishermen community also in the scheduled tribe list. With this note, I conclude my speech. Thank you, sir.
श्रीमती ममता मोहंता, 2 मिनट प्लीज ममता जी। धन्यवाद सर। आपने मुझे संविधान शेड्यूल ट्राइब संशोधन बिल पर बोलने की मौका दी। सभापति महोदय, त्रिपुरा राज्य के दलंग जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए शेड्यूल ट्राइब संशोधन बिल लाया गया है, इसीलिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। महोदय, मेरे ओडिशा राज्य की विभिन्न जिला के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाखों संख्या में कुर्मी लोग रहते हैं। माननीय जनजाति और कार्य मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी को पता है इस विषय के बारे में। जब वो मुख्यमंत्री थे 2004 में झारखंड के कुर्मी महंतो जाति को एसटी में शामिल करने के लिए मंत्री जी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। महोदय, टोटेमिक कुर्मी जाति को 1950 में बिना किसी कारण एसटी लिस्ट से हटा दिया गया था। तथ्य के अनुसार 3 मई 1913 को जब तत्कालीन सरकार को गेजेटेड नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जाति के सूची में कुर्मी जाति को एसटी होने का उल्लेख है। सर, कुर्मी महंतो जाति एक जनजाति है। कुर्मी महंतो जाति का भाषा, संस्कृति, परंपरा, पूजा पाठ अन्य जनजाति के साथ समानता है। सर, माननीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करती हूँ एक संसदीय समिति का गठन किया जाए और दोबारा कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री वी लिंगैया यादव। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से शेड्यूल ट्राइब का बिल पे बात करने का मौका दिए, आपको धन्यवाद। ये त्रिपुरा में Darlang is a tribal community of 11,000 people distribute its small population. The community has a high prevalence of education, cultural activities, and members of the community are servicing different high positions in the local administration. ये बिल को देने का में हमारा टीआरएस पार्टी समर्थन कर रहे हैं, मगर ऐसी एक हमारा सजेशन क्या है बोले तो ये इस देश में पूरा अब इंडिपेंडेंस आके 75 इयर्स हुआ। ये देश में कितने पॉपुलेशन है, ये ट्राइबल्स का कितने है, एससीस का कितने है, बीसीस का कितने पॉपुलेशन है बोल के अभी तक नहीं गिने। ये देश में कौन सा स्टेट में ये ट्राइबल्स कितने है, ये पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट को गिनने का देना। ये एसटीज का जनाबा वो ज़्यादा हो गए, लेटेस्ट बहुत बड़ा हो गए। हमारा तेलंगाना स्टेट में सीएम केसीआर ये 6% का ट्राइबल्स का पॉपुलेशन 10% है बोल के गिन के सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रतिपादन दिए असेंबली से। अभी तक वो इंटरेस्ट नहीं रखे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बिल ही नहीं आ रही बोल रही। ऐसे मैं क्या, हमारा पार्टी क्या बोलने का, इस देश को ये त्रिपुरा ये स्टेट वो स्टेट नहीं, पूरा देश को एक टारगेट, ये देश को एक यूनिट ऐसा लेके ये अमेंडमेंट करना बोल के हम बोल रहा हूँ। पूरा हमारा तेलंगाना में एसटी लोगों को ये 7 साल से 500 पॉपुलेशन रहे तो उधर हमारा वो ग्राम पंचायत बने, बाद में एसटी गुरुकुल पाठशाला दिए। तेलंगाना में एग्रीकल्चर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, रैतु बंधु से 10,000 दे रहे हैं ट्राइबल्स को, रैतु बीमा से 5 लाख दे रहे हैं फ्री से हमारा केसीआर, कल्याण लक्ष्मी बोल के शादी को 1 लाख रुपया फ्री दे रहे हैं ट्राइबल्स को। ऐसा ये ट्राइबल को बजट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंड देना बोल के मैं सजेशन दे रहा हूँ सर। ये बिल को हम समर्थन कर रहे हैं। थैंक यू। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी। Sir, I want to thank you for allowing me to speak on this constitutional amendment bill, which relates to the amendment of the list of scheduled tribes in the state of Tripura. We support the bill to include the Darlang community as a sub-tribe of Kuki in entry 9 in the list of scheduled tribes in respect of the state of Tripura. There is a need for comprehensive amendment of the scheduled tribe list. I would request the government to look into this and include all tribes that meet the specific criteria in the list. I would also take this moment
to highlight the issues of scheduled tribes, especially relating to my state, Andhra Pradesh. Inclusion of some of suggestions that we have, positives. Inclusion of Gondi language under 8th schedule. Gondi is an Indian language spoken by 2 million people across multiple states. So major concentrations of Gondi speakers are present in Madhya Pradesh, Gujarat, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh and AP. The Gondi language has a unique script and we want it to be included, this language to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution. So inclusion of Valmiki, Boya and Kurma communities of Andhra Pradesh. Valmikis and Boyas believed to be the decades of Sri Valmiki Maharshi. These are one of the most primate tribes of the region. These communities have traditionally earned their livelihood through hunting and gathering forest produce. Currently, the community is spread across southern states, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra and Telangana. The Valmiki Boya community in Andhra was included under scheduled tribes in scheduled areas, and the people from the same community living in other areas are considered backward classes. There is no sufficient rationale behind the differentiation of the Valmiki Boya community living in scheduled areas. So I would request the central government to accept the long-standing demand of the Boya Valmiki community by including the entire community under the scheduled tribe category. Similarly, the Kurma community also indicates their descent from Neolithic farming villages in South India. Kurma is a Hindu caste native, the Indian state of Karnataka, Tamil Nadu and AP and Telangana. This community also needs the support. Central Tribal University of Andhra Pradesh needs support. Andhra Pradesh government is doing major projects and support initiatives for various scheduled tribes under the initiatives. Sir, from YSR Congress Party, we support this bill. I would request the Minister to take our suggestions into account. I would again request him to carry out a comprehensive updating of the scheduled tribes list so that the welfare schemes of the central government reach the last tribal hamlets as well. Thank you. Dr. M. Thambi Durai. Deputy Chairman, sir, thank you very much for giving the opportunity to speak on this bill. And ADMK party, we are supporting the bill brought by to include Dorlang's community as scheduled tribe people in Tripura. Same time, sir, various our members go on raising the issue to include certain communities in the backward classes throughout India, especially Tamil Nadu. In Andhra, as they said, Tamil Nadu fishermen and Pondicherry fishermen community must be treated as tribal marine community. That is the long demand we are requesting. They are the suffering people. Same way as they said, Narikura community, it has been included. The Valmiki and Boya community, what he said, our Andhra member, Andhra Pradesh, they are also, in Karnataka, they are scheduled tribe. But Andhra and Tamil Nadu, they are not. Therefore, that has to be included. Kurumbas, Baduga community, Urular community, Banjara community. These are the communities are spreading throughout the India. Therefore, I am requesting the Honorable Minister, many times our Honorable Chief Minister, Amma Jayalalitha ji has written, and also present our former Chief Minister, Edappadi Palaniswamy also written so many times to include these communities, Tamil Nadu fishermen community, Narikura community, Valmiki community, and Badugas community, Kurumas community, and Urular community, Banjara community, include tribal community. I request there must be uniform kind of decision throughout the India. When state government is recommending, please let them consider it. Thank you very much. Thank you, Thambi Durai ji. माननीय श्री विशंभर प्रसाद निषाद जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय। त्रिपुरा राज्य में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने का बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मानव इसी तरह से उत्तर प्रदेश में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के भाग 18 उत्तर प्रदेश में क्रम संख्या 18 में बेलदार के साथ बिंद, गोंड के साथ गौड़, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, क्रम संख्या 53 में मझवार के साथ केवट, मल्लाय, निषाद, क्रम संख्या 59 में पासी, तरमाली के साथ भर, राजभर, और क्रम संख्या 65 में शिल्पकार के साथ कुम्हार, प्रजापति, और क्रम संख्या 66 में तुरैया के साथ धीमर, धीवर, तुरहा परिभाषित किया जाना है। मानो इनका आपस में रोटी बेटी का रिश्ता, खान पान एक जैसा है। और उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2015 में, 2016 में
केंद्र को प्रस्ताव भेजा था जो भारत सरकार के लंबित है। मानो जिस तरह से EWS का 10% का आरक्षण कर दिया गया था, ये जातियाँ सोशली बहुत सामाजिक शैक्षिक आधार पिछड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में कोई अलग से जोड़ना नहीं है। तो मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार में प्रस्ताव लंबित है तो ये हमारी कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में जो 17 पिछड़ी जाति हैं उनको अनुसूचित जाति में परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय। धन्यवाद विश्वम्भर जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब जी नहीं है। श्री राम जी नहीं है। माननीय संतोष कुमार। Support the inclusion of Darlong community in the ST list, but sir, I support the inclusion of Darlong community in the scheduled tribe list, but it has nothing to do with this unwanted claim made by the tertiary benches. They were claiming as if this very list was introduced by the current ruling dispensation. Sir, there are demands from various communities in different states to include in this list. The actual question is whether mere inclusion will serve the purpose of upliftment of tribes. This is the important question. So we have to answer to that question. Unfortunately, the current government's approach is actually helping to make only cosmetic changes. So we need a more deeper intervention to tackle with the tribal issue. So what I suggest is to table the ST Commission report. It was not yet tabled, and the last one was in the year 2019. So I request you to demand the Commission to table its report. After the 11th one, it did not table. So I request the same. Thank you. And sir, I'm a new member to the Sabha. One more. अच्छा, maiden speech. He wants to speak maiden speech. Please. So I don't want to take much of your time. This is your maiden speech. You please speak. No problem. Speak. So the tribal question is tribals constitute 8% of the total population. Whereas if we take into account the total number of poor people in India, tribals constitute 25% of. So that is the most important issue. And according to the National Health Survey, 45.6% of the tribes are living in lower income brackets. So we have to solve this issue. How? And unfortunately, development helps other sections to improve their livelihood, whereas development makes Adivasis victims. So victimization is taking place on one side, whereas development is helping other sections to improve their livelihood. So displacement from the homes, homelands, tribal lands, this is taking place on one side. So in the name of development, in the name of infrastructure development, it is badly affecting the lives and livelihood of tribals in this country. So we need a very serious intervention, and unfortunately, the approach of the current government is not helping us to achieve that. So I request you to compel the government to intervene this matter very seriously and to promote the cause of STs in this country. Thank you, sir. Thank you. माननीय संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि डॉरलॉन्ग कम्युनिटी को आपने आदिवासी कम्युनिटी में शामिल करने का फैसला लिया, लेकिन इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पे त्रिपुरा के तमाम आदिवासियों ने आंदोलन किया था मान्यवर। प्रद्युत जी उनके एक नेता हैं और उन्होंने आंदोलन किया था त्रिपुरा के अंदर आदिवासियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार ने जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा का जो वादा किया था, पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के लिए जो वादा किया था, उस वादे खिलाफी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करूंगा कि उनके मुद्दों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करके राज्य सरकार से
संवाद करके उसका समाधान कराने की कोशिश करें। दूसरा विषय मान्यवर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सहरिया कम्युनिटी है सर ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर। 2006 में जब वन अधिकार नियम हिंदुस्तान के अंदर आया, उसके बाद उन कम्युनिटीज के लिए कहा गया कि ये लोग जहां पर रहते हैं उनको उनकी जमीन पर पट्टे का अधिकार दिया जाएगा। 2006 से लेकर आज तक मान्यवर उनको ब्लॉक से क्लियरेंस मिल गया, तहसील से क्लियरेंस मिल गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी बातें उनकी मानता है। बावजूद इसके आज तक उस सहरिया कम्युनिटी का ललितपुर के इलाके में आज तक उनको पट्टा, उनको जमीन नहीं मिल पाया। तो इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए वहां की राज्य सरकार से बातचीत करके। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कानून आप बनाइए, दूसरी जातियों को जो ट्राइबल्स में आना चाहते हैं उनको अधिकार भी दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं उस पर भी गंभीरता से काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। माननीय अशोक सिद्धार्थ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। प्लीज प्लीज माननीय उपसभापति महोदय जी, प्लीज आपस में बात न करें प्लीज। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने SC/ST के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में हो या फिर विधायिका में हो, इस नियत से देने का काम किया था उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उनका विकास होगा। लेकिन आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी जो भारत सरकार में सरकारी नौकरियों में 15% SC का रिजर्वेशन है और 7.5% ST का रिजर्वेशन है, आज तक केंद्र की सरकार में अभी तक 50% से भी कम उनकी हिस्सेदारी देने का काम सरकार ने किया है। हम OBC से SC में कन्वर्ट करने के लिए या SC से ST में कन्वर्ट करने का काम निश्चित रूप से ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, इस बिल का भी समर्थन करता हूँ। लेकिन जितनी आबादी में, जितनी संख्या में उनको OBC से SC में कन्वर्ट किया जाए या SC से ST में कन्वर्ट किया जाए तो उनकी उतनी हिस्सेदारी भी आरक्षण की व्यवस्था की बढ़ाई जानी चाहिए। एक हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की मांग है। दूसरी मांग ये कि जो SC/ST का रिजर्वेशन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब 7 से 12 में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 30% रिजर्वेशन देने का काम किया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी 30% रिजर्वेशन देने का काम किया था। साथ ही साथ उन्होंने SC/ST के लोगों के लिए शहरों में मानवर कांसीराम साहब योजना के अंतर्गत 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया था और गांव में महामाया आवास योजना के नाम से करने का काम किया था। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वो जितनी भी, चाहे OBC की जो डिमांड है कि SC से OBC को SC में कन्वर्ट करने का काम किया जाए या फिर SC से ST में कन्वर्ट करने का, जो चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्यों में जिनकी आबादी के हिसाब से जो कन्वर्जन, जो उनको चेंज करने का काम किया जा रहा है, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि वो इनको चेंज करते समय, इनको उनकी स्थिति को बदलने के समय खास तौर से ठीक नीयत से काम करने का काम करें। अगर ठीक नीयत से नीतियां बनाई जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैकलॉग के माध्यम से 2007 से 12 में लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया था, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों के नाम पे 1,08,000 से ज़्यादा भर्ती करने का काम किया गया था। मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार, केंद्र सरकार में भी बैकलॉग के माध्यम से SC/ST OBC का कोटा भरने का काम करे और तमाम जो कंसर्न स्टेट हैं जहाँ पर SC/ST का कोटा अभी पूर्ण नहीं है, उस कोटे को पूर्ण करने का काम करें। इन बातों के साथ सरकार से इस निवेदन के साथ कि वो अपने जवाब में माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें, क्या वो इस कोटे को पूर्ण करने का आश्वासन इस सदन में देंगे। इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपकी बातें महत्वपूर्ण है, पर यह बिल है त्रिपुरा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज प्लीज माननीय श्री राम विचार नेताम। धन्यवाद बहुत है। एक तो धन्यवाद इसलिए कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे बोलने का अवसर न मिले।
और इसलिए आपके कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि मैं एक तरह से अंतिम वक्ता बोल रहा हूं और इस सदन में करीब मेरे कार्यकाल का अंतिम भाषण मान के चल रहा हूं। मेडन स्पीच का तो प्रावधान है। मेडन स्पीच है तो मान लीजिए फिर भाषण भी आपका हम लोगों ने सुना है। महोदय पर बोलिए महोदय, मेडन स्पीच तो मेरा हुआ जी, लेकिन इसको मान लिया जाए कि फेयरवेल स्पीच। प्लीज विषय पर बोलिए। और इसलिए महोदय मैं अभी बड़ा गौर से बाकी हमारे माननीय सदस्यों की बात को सुन रहा था। ये त्रिपुरा पर केंद्रित है। हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके दुख दर्द की चिंता करते हुए उनकी सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो, इसके साथ साथ ये सब तक काम हो रहे हैं महोदय। लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों ने अपना पूरा समय देश के आज़ादी कितने सालों के बाद और उधर बैठे हुए न जाने कितने सालों तक राज करने वाले लोग, उनको जरा भी चिंता नहीं थी कि त्रिपुरा में भी कुछ ऐसी जातियां हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आदिवासियों की सूची में शामिल करना जरूरी है। अब एसटी सूची में आज तक नहीं शामिल हुआ, उसके लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं अभी सुन रहा था बंगाल के हमारे कुछ मित्र बात कर रहे थे, अन्य राज्य के हमारे मित्रगण बात कर रहे थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, गांव में ऐसा बोलते हैं कि सूपा बोले तो बोले, चलनी बोलने लगा, जिसमें इतने सारे छेद। बंगाल को हम भूल सकते हैं? बंगाल में किस तरह से हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के साथ किस तरह से बर्बरता हो रहा है, किस प्रकार से अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है, देख करके शर्मा जाएगा। देश की आजादी में आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देश की आजादी में, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yesterday the chairman said Yes. that nobody should utter name of any state. No state should be mentioned. In spite of the direction of the chair, We'll see. the honorable member is making allegations. We'll examine. False allegations against him. We'll examine it, please. महोदय, मैं बिल पे ही बात कर रहा हूं। प्लीज चूंकि शुरुआत इन्होंने की है, शुरुआत इन्होंने की है तो उसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा महोदय। प्लीज। और रही बात महोदय, मैं आपकी ओर ही देख के बात कर रहा हूं। बिल त्रिपुरा पर है, बोलिए। हमारी सरकार जब से आई है, वहां गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए और वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां की संस्कृति के बचाने के लिए, वहां के लोगों को कैसे समृद्ध और संपन्न कैसे बने, कैसे इम्पावर उनमें कैसे हो, इन सभी का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने जो वहां त्रिपुरा में काम कर रहा है, और उसी का देन है कि आज ऐसे अछूते, ऐसे लोग जो वंचित थे, उनको शामिल करने के लिए वहां हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव के आधार पे हम शामिल कर रहे हैं महोदय। यही नहीं, हमारी सरकार ने पूरे देश में और इस वर्ग के लिए आज जिस प्रकार से काम करना शुरू किया महोदय, आज सबका जो है, आज मैं समझता हूं कि आप इसको कैसे नकार सकते हो? आप सच्चाई को कब तक नकारते रहोगे? और आप नकारते नकारते आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि आप लोकसभा में तो आपका वहां नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, अब लग रहा है यहां से भी आप जाने वाले। यही स्थिति। आप सच्चाई को आप कब तक नकारते रहेंगे? आप मानिए हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, गरीबों के, आदिवासियों को, दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, ऐसे लोगों के आज एक तरह से उन्हें भगवान के रूप में आज देख रहे हैं। और यही कारण है आपने महोदय, आपने जहर बोने का काम नहीं किया। आप इतना जहर बोया। आप बिल पर बोलिए, बिल पर त्रिपुरा से संबंधित बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। यही निवेदन है कि हम लोगों ने भी इसी प्रकार से महोदय इसको समझना पड़ेगा। आपके प्रस्ताव से, तमाम सारे राज्यों के प्रस्ताव आने से सिर्फ जो है एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकता। उसके लिए हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल है महोदय।
उस जटिलता से ही हमें गुजरना पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से उसका पूरा रिसर्च होते हैं, उसकी जांच होती है, तब जाकर के आरजीआई जो रिपोर्ट देता है, उसके बाद में एग्जामिन करने के बाद तब जो है लिस्ट जो फाइनल होता है उसके आधार पे हम करते हैं महोदय। बाकी राज्यों में भी, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो जातियां हैं, हम मानते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो बिंदी का, हर्ष लोप का और कहीं उच्चारण का अलग अलग राज्यों में कुछ अलग, जैसे बांग्ला में कुछ भाषा को कुछ और बोलेंगे, कुछ जातियों में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसी को दूसरा बोलेंगे, झारखंड में दूसरी बात बोलेंगे। लेकिन असली बात महोदय, ये जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रिंट करने वाले, उसको भाव और भंगिमा और उसकी भाषा को नहीं समझ पाते बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां जब रिसर्च होता है तो ये सभी बातें साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च का रिपोर्ट आता है उसके आधार पे होता है महोदय। महोदय, आपको सिर्फ गाली देने से, आप इस तरह से गाली दे रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, और गाली देते देते क्या हालत हो गया। आप हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की बात, एक समय तो बोले कि ये वैक्सीन आया और ये मोदी वैक्सीन है। अरे भैया, और बाद में धीरे धीरे चुपचाप आप सबसे पहले आप ही लगवाए। वैक्सीन तो हम लोग लगवाए, हम लोग के लिए हमारी सरकार लाया। माननीय नेताम जी, हुआ कि यही वैक्सीन बचा सकता है, माननीय नेताम जी, सबसे पहले लाइन लगा के आप लगाना। विषय पर महोदय, इसी प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में महोदय, ये त्रिपुरा से जुड़ा मामला है। जी जी जी, त्रिपुरा से, इसी छत्तीसगढ़ में भी त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मुझे, ट्राइबल का जो कल्चर होता है, उसकी समझ होती है, उसकी भाषा होता है, उसका एक संस्कृति है, वो महोदय आज उस पे आज खतरा जो है मंडराने लगा है। चाहे त्रिपुरा की बात हो, चाहे बाकी राज्यों की बात हो। मैं सरकार से, मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से मैं मेरी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं महोदय। आज जिस प्रकार से हमारी जातियों के ऊपर आज खतरा, हमारी वर्ग के ऊपर जिस प्रकार से खतरा आज बढ़ रहा है, तमाम तरह जो एक तरह से धर्मांतरण करने का जो कुचक्र चल रहा है, ये समाज को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को, हमारे आदिवासी कल्चर को ये समाप्त करने का, हमारी जो तमाम तरह का जो सुविधा जो होता था, हमारा रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, वो जो तमाम तरह की जो भाषा बोली होता था, उस पर आज जो है ग्रहण लगने लगा है महोदय। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इस पर जरूर प्रतिबंध लगाएगी महोदय। और ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये डबल जो सुविधा लेने की जो बात कर रहे हैं, डबल हमारे नाम से भी ले रहे हैं और दूसरे नाम से भी ले रहे हैं महोदय, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए महोदय। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैं यही बोल रहा था कि मैं शायद अब दोबारा इसमें सदन में मुझे बोलने का अवसर न मिले महोदय। एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, हमारे बहुत सारे आदिवासी समाज की बेटी बहन, आदिवासी समाज की बेटी बहन को दूसरे लोग बड़ी तादाद में उनको रख रहे हैं, और उसका लाभ जो है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से भी तमाम तरह का जो राजनीतिक लाभ लेना होता है उसमें भी ले रहे हैं। इसके लिए भी कानून बना के उसे रोकने का काम होना चाहिए महोदय। ये मेरी पीड़ा है महोदय। मैं इसके साथ में यही कहना चाहता हूं महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जो है हमारा समाज जमीन, सबसे अधिक जो ट्राइबल होता है वो जमीन और जमीर के लिए मरता है महोदय। इसको जमीन और आज जमीर के लिए वो मरता है, इसको आज बचाने की जरूरत है महोदय। महोदय, आज हमारा समाज, ये आदिवासी समाज, चाहे त्रिपुरा की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे अन्य राज्य की हो, यहाँ जो है इतिहास और भूगोल और अपनी संस्कृति के लिए मरता है और जीता है महोदय। इसको हम कैसे हम सुरक्षित रख सकें, कैसे हम बचा सकें, और ये सभी बातें हैं महोदय। महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जिस प्रकार से त्रिपुरा में आज वहाँ के आदिवासी, मैं खुद गया हूँ महोदय, मैं मोर्चा का काम करते हुए त्रिपुरा के सुदूर अंचल में भी मैंने दौरा करके वहाँ के आदिवासियों की पीड़ा को मैंने देखा है महोदय। वहाँ के जंगल, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ इतनी खूबसूरत, वहाँ की जो स्थिति है महोदय, इतना खूबसूरत में आज वहाँ भी जिस प्रकार से लोगों ने जाकर के शोषण किया महोदय, उन सबको भी बेनकाब करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और उनको बेदखल करना चाहिए महोदय। आज इस
प्रकार से महोदय आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये सरकार कोई दूसरी सरकार नहीं है, ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इधर उधर सरकार नहीं है। और इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप इधर उधर की बात न करो, वो बताओ आपकी कारवां कैसे लूटा, आप बता सकते हैं महोदय। महोदय मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हवा ही रोशन करेगी रोशनी, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद राम विचार जी। अब माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूथा जी का जवाब। माननीय सभापति महोदय, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा त्रिपुरा राज्य के डारलोक समुदाय को कुकी समुदाय के उपजाति के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा राज्य में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 11,66,000 है, जो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 31.76% अनुमानित है। डारलोक समुदाय को सूची में शामिल होने के पश्चात इनको भी जनजातीय समुदाय के रूप में एक पहचान मिलेगी। कुकी समुदाय देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है और डारलोक समुदाय को इस सूची में शामिल होने के पश्चात त्रिपुरा राज्य में कुकी समुदाय के 18वें उप जनजाति के रूप में इसका समावेश होगा। त्रिपुरा राज्य में 19 प्रमुख जनजातियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुकी समुदाय के उपजाति डारलोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक में आज राज्य सभा के माननीय कई अनुभवी सांसदों के सुझाव आए, विचार आए। मैं उनके सुझाव का, उनके विचारों का सम्मान करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी समस्याएं एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उनकी भलाई के लिए, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय का निर्माण किया। और आज इस सदन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनजाति कार्य मंत्रालय और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के जो 41 मंत्रालय हैं, अपने अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास और अनेकों इस योजनाओं के माध्यम से उनके विकास और भलाई का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य मेरी बहन फूलो देवी नेताम, मानिक शाह, शांतनु सेन, मोहम्मद अब्दुल्ला, ममता मोहंता, बी लिंगायत यादव, अयोध्या रामी रेड्डी, एम थब्बी डुराई, विशंबर प्रसाद निषाद, संतोष कुमार, संजय सिंह, अशोक सिद्धार्थ, आदरणीय राम विचार नेताम जो स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं, इन सभी ने अपने अपने सुझाव को शामिल करते हुए इस विधेयक पर अपना समर्थन दिया है। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई जातियों को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, उनके संबंध में यहाँ पर कहा। मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में माननीय अर्जुन मुंडा जी स्वयं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित भारत देश के जिन राज्यों से भी आदिवासियों की सूची में शामिल करने वाले जातियों के जो प्रस्ताव हैं, उन सब पर हम बहुत गंभीर हैं और इसके लिए बार बार हमारी बैठकें हो रही हैं। और जो प्रपोजल हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो अधूरे हैं, इसके लिए हम राज्य सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं।
हमारी बहन फूलो देवी नेताम जी छत्तीसगढ़ के संबंध में कह रही थी, मैं फूलो देवी नेताम बहन को ये कहना चाहती हूँ कि सन 2003 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, ये देशवासियों से छिपा नहीं है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 से लेकर 18 तक हमारी सरकार ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के विकास के लिए बहुत काम किया। और जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सली उन्मूलन के लिए बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम किया। प्लीज नो, नहीं, आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, प्लीज बिना इजाजत के बोल रहे हैं। पहले वहाँ पर 16 जिले हुआ करते थे। हमने बस्तर क्षेत्र में बीजापुर और नारायणपुर को पहले जिला बनाया और इसके साथ 2011-12 में एक साथ हमने 9 जिलों का निर्माण किया। और इसके साथ साथ जहां भी पब्लिक की डिमांड आई, हमने एक साथ 49 तहसील का निर्माण किया। आज पहले छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार 15 सालों में वहां का विकास हमारी सरकार ने किया, आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर दिखाई देता है और हर एक क्षेत्रों में वहां पर विकास हुआ। आज मैं जरूर कह सकती हूं कि 3 सालों से वहां पर विकास ठप है। अभी एक छोटा सा बाई इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में एक साल्हेवाड़ा करके ट्राइबल क्षेत्र है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जनता को एक प्रलोभन दिया है कि आपने यदि खैरागढ़ का चुनाव हमें जिता दिया तो 24 घंटे के अंदर हम जिला बना देंगे। जिस प्रकार से आपने 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामने कहा था कि हमारी सरकार बने, मंत्री जी की जवाब रिकॉर्ड पे जा रहा है, शायद कर देंगे। ठीक इस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में एक छोटे से चुनाव में जिला बनाने के लिए आपने घोषणा की है। साथ में हमारी बहन ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा में भी 2023 में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को ध्यान रखते हुए आपने वहां के लोगों का वोट लेने के लिए ये विधेयक को लाया है। देखिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कल झारखंड का हमने प्रस्ताव पारित किया। झारखंड की जनता देश की आज़ादी के बाद से, वहाँ की जो जातियां हैं जिनको कल हमने शामिल किया, वो देश की आज़ादी के बाद से इंतजार कर रही थी कि हम कब सरकार हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा की जनता भी, त्रिपुरा की जो डारलोग जनजाति है, वो भी इंतजार कर रही थी। और ये ऐसी सरकार है बहन जहाँ पर जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को यहाँ पर पूरी की जाती है। तो आपने जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की चिंता की है, उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। शांतनु सेन जी ने अपने सुझाव के साथ साथ आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। मैं जरूर कहूंगी इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन आपकी सरकार की वजह से, पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से वहां पर जनजातियों को उनका हक हासिल नहीं हो पा रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हमारे जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रदेश की जो जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती है, ऐसे जनजातियों के संबंध में आपने अपने विचारों को यहाँ पर रखा है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम एक एक करके उन प्रस्ताव को सदन के माध्यम से पारित करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विषय आए, बहुत कम समय में कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि किसी भी जाति के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने
ट्राइबल क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013-14 के पहले ये एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सदन को बताते हुए कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और एक स्कूल में 480 बच्चे सीबीएसई कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ पर होती है और उन बच्चों की बहुत इच्छा होती थी कि जिन स्कूलों में हम पढ़ाई कर रहे हैं उन स्कूलों की बिल्डिंग भी बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए। मैं सदन को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब एकलव्य मॉडल स्कूल के जो बिल्डिंग है पहले हम 20 करोड़ का बनाया करते थे, आज 38 करोड़ के एक बिल्डिंग का निर्माण वहाँ पर होगा। और जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल रहते हैं, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग रहती है, ठीक उसी तर्ज पर आज हमारे स्कूल होंगे। और इसी तरह से हमारी बहन कह रही थी कि हमारा बजट कम हो गया है। बजट हमारा कम नहीं हुआ है। पहले 2013 और 14 में मैं ज़रूर कहूँगी कि 19,437 करोड़ ट्रैवल मंत्रालय का बजट था, लेकिन आज 2022-23 का जो बजट है 87,585 करोड़ रुपए का बजट है। Please, let her complete. Please. No, please, let her complete. Yes, let her speak first. Let her speak. Please. Let her continue. ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए जो ट्राइबल सब प्लान है 2013-14 में ये 21,525 करोड़ हुआ करता था, आज 85,930 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है। वनधन विकास ये मेरा सारे सदस्यों से आग्रह है कि मिनिस्ट्री पर बोले। सभी सदस्यों से मैंने बार-बार आग्रह किया। समाज के लोग हैं, प्लीज वन क्षेत्रों में रहते हैं और आदिवासियों का जीवन जंगल के ऊपर निर्भर है। ऐसे वनवासियों के वन विकास केंद्र की मैं चर्चा कर रही हूँ। आप जो भी माननीय सांसद ट्राइबल क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिनका जीवन जंगल पर आधारित है, ऐसे माननीय सदस्यों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने कहा था कि हम पूरे देश भर में 50,000 वनधन विकास केंद्र खोलेंगे। आज 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र। देखिए 2 साल कोरोना में के कारण हमारा काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन आज 2022 में 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र खुल चुके हैं और कई लाख जो ट्राइबल है वो उनको इसका लाभ मिल चुका है। एक वनधन विकास केंद्र में 300 लोगों की संख्या होती है। 60% उसमें ट्राइबल रहते हैं, 40% अदर समाज के लोग रहते हैं और उनके आसपास जो भी वनोपज मिलते हैं उन वनोपज को संग्रह करके उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, उसके मूल्य संवर्धन के लिए उनको देखिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाता है और वो जिस सामान का निर्माण करते हैं उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है, लॉन्चिंग होती है, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती है। तो उनके उद्यम के लिए, उनके रोजगार के लिए जो ट्राइबल कभी मजदूर हुआ करते थे, आज हमारे सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम उन मजदूरों को मालिक बनाएंगे और उन्हें मालिक बनाने के लिए ट्राइबल मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से काम कर रहा है। और इस माननीय मंत्री जी कंक्लूड करिए समय। इस प्रकार से हम एक और उनके विकास की चिंता कर रहे हैं। अभी इस बजट में हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम लाया है, उसका बजट प्रावधान हुआ है और ऐसे गांव को हमने चुना है जहां की ट्राइबल जनसंख्या 50% से ऊपर है। तो हमारे मंत्रालय ने ये सर्वे किया कि ऐसे कितने गांव हैं, तो पूरे देश भर में लगभग 1,47,000 से भी ऐसे 50% ट्राइबल बाहुल्य वाले गांव हैं। उसमें से 36,000 गांव को हमने इस वर्ष लिया है
और उन ग्राम पंचायतों में 100% विकास के लिए, जैसे कुछ राज्य सरकार भी उसमें काम करेगी और जहां जहां पर भी गैप रह जाएगा उस गैप फिलिंग के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से काम करेगी। आज त्रिपुरा के इस विधेयक को पारित कराने के लिए हमारे राज्य सभा के हमारे बहुत अनुभवी माननीय सांसदों ने अपनी बात को रखा है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Renuka Singh Saruta to move that the bill be passed. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. माननीय अमित शाह। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर कर, इसका एनालिसिस कर कर, इसका उपयोग कर कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता तब तक उनको सजा नहीं होती। और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से अपराध करते हैं, अपराध को जिन्होंने पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराते ये सिलसिला टूटता नहीं। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है, संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता। और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इसके लिए
अंग्रेजों के समय में बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। देश के विधि आयोग ने बंदी सेना अधिनियम 1920 पर 1980 में अपनी 87वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी और उसके अंदर ये जरूरत महसूस की गई विधि आयोग के द्वारा कि 1920 के दांडी जांच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप 1920 के कानून को बदलने की जरूरत है। विधि आयोग ने यह भी कहा कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा करी कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं उसके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए और कई सारे जजमेंट्स ने भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने अलग अलग समय पे की है। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए हैं, परंतु इस पर समग्रता से विचार कर माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुनाह को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप लेने के लिए मैं यहाँ ये विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में विस्तृत मैं बताना चाहूँगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद इनसे आए हुए सारे सुझावों, उनसे आए हुई सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए मैं समापन के वक्त पर इसको विस्तृत में रखूंगा। मैं अंत में सभी सभासदों से कहता हूं कि अपने अपने मूल्यवान विचार इसके पक्ष में, विपक्ष में जो है वो यहाँ पर। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। देयर आर 3 amendments by Sri Trichu Sivaji, Sri Sukhendu Shekhar Roy ji and Sri Abdul Wahab ji for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri Trichu Sivaji, are you moving? I am moving the motion. Moved. Amendment moved. Mani Sri Sukhendu Shekhar Roy ji, are you moving? Amendment moved. Mani Sri Abdul Wahab ji? Not present. Amendment not moved. The motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. Mani P. Chidambaram ji. Mr. Deputy Chairman, when I rise to speak in this House, I have to remind myself that this is Parliament, the highest seat representing the sovereign power of the people. We gave ourselves a constitution. We are bound to honor the constitution. But I'm sad to say, I deeply regret to say, when a bill like this is moved and passed in this House, we are wittingly or unwittingly breaking the Constitution every day.
I know that this bill has been approved by the Cabinet of the Government of India. I know that this was introduced in the Lok Sabha. I've read that several suggestions were made in the Lok Sabha to amend the bill, to refer it to a standing committee, to refer it to a select committee. But I deeply regret that not one suggestion was accepted by the government. The bill has been passed as it was introduced, and I'm afraid, given the current circumstances, it will be passed in this House also without taking into account any suggestions. What is wrong with the suggestion of my distinguished colleagues who said, refer this bill to a select committee, refer to this bill to a standing committee? If we can wait 102 years to change a bill of 1920, why can't we wait for 102 days for the bill to be brought after examination by the standing committee? What did not happen in 102 years is not going to happen in 102 days. Sir, I want to know who's taking ownership for drafting the bill. Ownership for the bill is the Cabinet of the Government of India. But who is taking ownership for drafting the bill? And I'll explain why this bill is extremely defective, apart from being dangerous. Firstly, sir, this House must know there are existing laws on identification of prisoners. The Criminal Procedure Code has Section 53, Section 53 capital A, and Section 54. They were introduced in 1963, not in 1920, 1963. There is the other bill which the Honorable Home Minister referred to, the Identification of Prisoners Act 1920. There is also another bill which is pending, the DNA Technology Use and Application Regulation Bill of 2019, which I believe has been reported back to the House. Now, why is the DNA Technology Regulation Bill kept pending since 2019? And why is this bill being introduced? What have you found lacking in the Criminal Procedure Code? What have you found lacking in the DNA Technology Regulation Bill, which is sought to be made up by this bill? So the statement of objection reason says, and I summarize it in 3 sentences, to expand the ambit of powers, to use modern techniques for body measurements, and 3, to provide legal sanction. And these are harmless words. The harm, the mischief lies in these sections. Let's look at these one by one. I want to ask the Honorable Home Minister and the Treasury benches, have you considered the development of law in the last 20 or 30 years, and especially since the year 2010? The Constitution is a living document. Its sole interpreter is the Supreme Court of India. We can make law, but what we made is interpreted by the Supreme Court. While the privilege of making a law belongs exclusively to Parliament, the power to interpret the law exclusively belongs to the Supreme Court. That is the division of powers. Has the government taken into account 2 historic judgments of the Supreme Court in the last 20 years, last 10 years? The first is the judgment of Selvi, was a state of Karnataka, pronounced on 5th of May 2010,
And the second is the Justice Puttaswamy versus Union of India judgment pronounced on 24th of August 2017. Selvi says, and I'm not going to quote copiously, Selvi says, while examining narco-analysis, polygraph test, and brain electrical activation profile, commonly called BEEP. Kindly remember these three words because I will refer them again. Narco-analysis, polygraph test, commonly known as lie detector test, and brain electrical activation profile. And the court said, in our considered opinion, subjecting a person to the impugned techniques, these three techniques, is an involuntary manner violates the prescribed bounds of privacy. In the light of these conclusions, we hold that no individual shall be subjected to any of the techniques in question, whether in the context of investigation, in criminal cases or otherwise. Since 2010 in this country, the law in this country is narco-analysis, polygraph test, and BEEP are unlawful, unconstitutional. They violate liberty and privacy. The second judgment in Puttaswamy's case said, an invasion of life or personal liberty must meet the threefold requirement. One, legality, which postulates the existence of a law. Two, need, defined in terms of a legitimate state aim. And three, proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them. This law, which the Honorable Home Minister introduced, goes directly against the pronouncement in Selvi, and it fails every one of the three tests laid down in Puttaswamy. Let's reflect on what we are doing. What we think we are doing is not final. It has to pass the test of the Constitution. It has to pass the test of the Constitution as interpreted by the Supreme Court. And with open eyes, we are considering a law which directly violates, as I will demonstrate, directly violates Selvi and directly violates पत्र की प्रासंगिकता कई जगह तो चुनाव के एक दिन पहले आता है तो liberty and privacy are two of the most cherished rights in a democracy. Let me repeat it. There's nothing more important to the dignity of a human being than liberty and privacy, which is why the law is developed all over the world in democratic countries to protect liberty, to protect privacy. Sir, derogation of any right is the starting point of denial of that right. Erosion of any right is a starting point of extinguishment of that right. We think we are only derogating, but eventually this will lead to denial and destruction of liberty and privacy. We think we are only eroding at the fringes, but this will lead to extinguishment of all rights. Let's look at the provisions one by one. There are 4 key provisions, and I will take 2 minutes on each provision. And under each provision, I will ask a question, and I sincerely hope the Honorable Home Minister will answer the question directly and specifically. First, look at Section 21B. Section 21B of the Act allows the police
and the prison authorities to take measurements. The word measurement is defined to include biological samples and their analysis, behavioral attributes, or any other examination in section 53, 53A, and 54 of the Criminal Procedure Code, which refers to such other tests. I hope the link is clear. Measurements in this law, this bill, has three components, but the third component refers to the Criminal Procedure Code, which says such other tests. So the such other tests must be read into this section. Now I ask a specific question, and I pray for a specific answer. Do these measurements include narco-analysis, polygraph test, brain electrical activation profile, and psychiatric examination? If they are not included, let us make it clear. If they are included, let us make that clear. Each one of these is unlawful. And if by measurements, if by biological samples and their analysis, by the phrase behavioral attributes, and by the phrase such other tests, you are including narco-analysis, polygraph, beep, and psychiatric examination, this bill is unconstitutional. Let's take the next section. Section 3. It starts by saying any person. That includes all of us. Any person. Now tell me, I ask honorable members, I wish I could speak in a lighter vein. I ask all members in this House, active political person, trade unionist, social activist, a progressive writer, has anyone not violated any law in this country? When the police say there's section 144, you can't proceed, and you take 2 steps forward, you are violating a law. If there's an order that you shall give security for good behavior, and you don't give security, you are violating a law. And the punishment for many of these offenses is 200 rupees fine, or 500 rupees fine, or imprisonment up to 1 month, or fine. I ask most humbly, is there anyone in this House who has not violated a law? I ask the Honorable Home Minister, who has had an active political career, have you never violated any law? Now what does this section say? This section says, any person convicted of an offense punishable under any law. So even if you are convicted of an offense where the punishment is 100 rupees, this law applies. If a person is ordered to give security under section 107, 108, 109, 110, 117 for keeping the peace, for good behavior, you are violating the law. If you are arrested in connection with an offense punishable under any law, if a bus driver strays from the bus lane in Delhi, he is violating a law. Detained under any preventive detention law. Is there any member of the Communist Party of India, the Communist Party of Marxist Party, who has never been detained? Since A.K. Gopalan, preventive detention laws are there in this country. And this is any law, any punishment, detention, not a charge, arrest,
no charge, even for arrest, for detention, for order to give good behavior, any law, if you are arrested, this law applies. So tomorrow, if the members of the All India Trinamool Congress or the Aam Aadmi Party or the Congress Party march from Gandhi statue to Vijay Chowk and the police stop you, they can arrest you. And the moment they arrest you, they will take all your fingerprints, your DNA samples, your behavioral samples. That is the law. Let the Honorable Home Minister say, this is not the law. These sections will be excluded. Then exclude them. And the question is there any person in this house who can say, I've never violated any law in this country, or I will never violate any law in this country? We are not talking about heinous crimes. We are talking about simple laws like order to give. The third section is Section 4. Section 4 says, store, preserve for 75 years and share and disseminate such records with any law enforcement agency. My third question is, who is the law enforcement agency? A law enforcement agency is not defined. Literally, simple, plain English language. Law enforcement agency is any authority enforcing any law. Now, what does that mean? A panchayat enforces the Panchayat Act. A municipal officer enforces the Municipal Act. The health inspector enforces the Food and Safety, Food Safety Act, Food and Drugs Act. So, a panchayat is a law enforcement agency. It doesn't define law, it doesn't define agency. So anybody who's got a law to enforce the law, to apply the law, to implement the law, will get the measurements. He can ask for these measurements and will be given to him. Is this the intention of Section 4? Why don't you define law enforcement agency? Why do you say law enforcement agency? Any agency which enforces any law will be covered. The last is Section 5. Now, a person is required to give these measurements. That is the first section. Section 5 says, magistrate may direct measurements to be taken, and such person shall allow measurements to be taken. If he refuses, police officer may take the measurements, and if he obstructs the police officer, he is punishable for an offense under Section 186. I ask myself, can these measurements be taken without my consent? Can these measurements be taken against my will? It's not clear whether Section 2, which obliges a person to give the measurements, read with Section 5, which empowers a magistrate to pass an order directing him to give the measurements, if both are read together, then this is involuntary confession. This is involuntary testimonial compulsion. This is directly violative of Article 20 and Article 21. This directly violates Selvi. This directly violates Puttaswamy. Finally, sir, there are more questions. Has the government been told that the European Court of Human Rights has held that fingerprints, DNA profile, and cellular samples and their retention, storage without consent violates human rights? That's the European Court's ruling. Does the government know that there is no scientific basis, and I say this on authority, there's no scientific basis to presume
that any of the measurements, including handwriting, fingerprints, is unique to a person. Does the government recall that UIDAI filed an affidavit saying 6% of fingerprints under the Aadhaar scheme failed, the results failed? Does the government know that in the iris scan, the UIDA admitted that the failure rate is 8.54%? Does the government know that the President's Council of Advisors on Science and Technology in the USA has advised the United States government that DNA analyses are neither valid nor reliable? This is the state of science today. And you are saying science is impelling us to pass this bill. Sir, this bill is unconstitutional. This bill is illegal. We are deceiving ourselves if we believe that we are passing a bill. This bill has a huge net which can embrace anyone in this country, and you know what happens when a law of this is applied. The worst sufferers will be the disadvantaged, oppressive, and the oppressed and the poor. Sir, I oppose this bill. I ask this House to reflect. Since we won't have time to reflect today, I beg of you, send this to a standing committee or send this to a select committee and let them examine and come back. What has waited for 120 years, 102 years, can wait another 102 days. Thank you. Honorable Sri Mahesh Jetmalani. Honorable Chairman, sir, I thank you profusely for permitting me to speak in support of the Criminal Procedure Identification Bill 2022, passed by the Lok Sabha and laid before this Honorable House by the Honorable Minister. Honorable Chairman, I'll first deal with the arguments raised by Mr. Chidambaram, Honorable Member in the opposition. Given his weight, his experience, about the fact that he's been presiding himself or has presided himself over the passing of many statutes. Now, the first argument which he raised was that why after 102 years? Well, I am not one of the people who I'm not associated with the drafting of this bill, but I can only presume the reason why this bill has been passed now. This bill has been passed because the present government, in the light of its experience of the last 7-8 years, has realized that previous governments, including those which Mr. Chidambaram was a part of, have relied only upon the Identification of Prisoners Act, which is an outdated, obsolete act, because the technological use of that act it no longer holds good except for some provisions. And my lord, advanced technological improvements, particularly the use of biometrics, my lord, which is now the gold standard for investigation of crime and for detection of criminals, is now worldwide used, including USA. And I will point out that some of the facts which he has stated are quite wrong. So, my lord, what I'm saying, I beg your pardon. Force of habit, sir. Mr. Chairman, the first argument is that it is never too late to rectify a delay, particularly when that delay has been found to prolong detection and trials. And, my lord, most important, the conviction rates in this country have suffered as a result of not bringing in the technological advancements in biometrics which help to detect that crime. Honorable Chairman, I'll deal with the constitutional challenges which Mr. Chidambaram has raised later on. But let me deal with his challenge to the definition. He says that the Supreme Court has barred as unconstitutional in Selvi's case, a case of 2010 or 11, the use of narco analysis
brain mapping, and lie detector tests. The language of this act, this bill, which has been introduced, in no way permits the use of those techniques which Mr. Chidambaram says has been, with Selvi's case says, have been barred as unconstitutional. Mr. Chairman, I would request Mr. Chidambaram and other members of the House to kindly take a look again at the definition which he referred to. Measurements. He cavilled against the definition of measurements. Measurements includes finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan. I'll come to how important the development in iris and retina scan have been in other jurisdictions and how they've helped in the detection of crime. But he seems to have an objection and says that the world's physical and biological samples and their analysis allow the government to smuggle in indirectly what is prohibited by law, i.e. the results of narco-analysis, brain mapping, and lie detector tests. Now, so a simple look at the language, and if Mr. Chidambaram would have read it more closely, he would have realized that all these three methods of obtaining evidence are by inducing an accused person or a convict. You have to induce them with external stimuli. Thus, in the case of lie detector test, you have to put a lie detector. You have to attach an external device to get stimuli. This is neither a physical or a biological attribute of any individual. In the case of brain mapping, electrodes are put to a brain. An external stimuli again to get brain waves and map the responses of an accused person or a convict. And then the third, which is narco-analysis, you use a drug, a truth serum, to extract the truth from a person accused of an offense. The definition of measurements, i.e. physical and biological attributes, do not and cannot take within its sweep these kind of tests. These are not attributes of a person, neither physical or behavioral, but these are tests conducted and responses given, either oral, in the case of truth serum drugs, or behavior, sensory, in the case of others, like, for instance, brain mapping. So you give a sensory response. Neither of these come within the definition of physical or behavioral attributes. Then my friend, Mr. Chidambaram, and not here I agree with him, I must say I am in agreement with him, has a problem with Section 3. And many people have had this problem. It has been voiced in the other house as well. He says that certain classes, apart from convicted criminals and people arrested and facing trial, he says, the other classes, which are those who are to give security, and they are mainly for petty offenses, and detainees. And what I'm particularly concerned about detainees, because we know the rigors of the emergency. We know what Mr. Chidambaram's government did in 1975 when they detained thousands of opposition leaders for petty offenses, purely on political grounds. So I'm in agreement on that issue. Perhaps that part needs a second look at. Convicts and under trials must be subjected to the provisions of this Act. But there is a case made, and I agree with Mr. Chidambaram, as I said, that yes, people under 110 of the Criminal Procedure Code, that is for giving security for good behavior, and the other class of persons, detainees mainly, who can be subjected to political vendor, and experience shows, particularly in 1975, more than 20,000 people were subjected to that kind of treatment, should be prohibited from the rigors of this Act. Then, sir, he says, Section 4.
and he says that on law enforcement. Now, as far as law enforcement is concerned, this is only sharing evidence. This is only the sharing of evidence. Other investigating agencies involved in law enforcement, they only get to analyze that data. So the origins of this entire record basis came in England in 1920. In 1920, this act was passed. Now, one of the criticisms I've heard in the other house, when I've heard their speeches, is that this is a colonial legislation. You are perpetuating a colonial legacy and, in fact, making provisions which are even more stringent. The fact of the matter is, A, it is not a colonial legacy. In England itself, in 1901, police first started using the kind of measures which the 1920 Act contemplates, which is fingerprint. At that time, those were the only biometrics. Fingerprints, footprints, and photographs. So those were the only measures used, and they were not colonial because they applied as much to UK citizens as it did to all colonies. What is colonial is the attitude in not updating those biometrics by present legislation. And that is what his government has been guilty of all these years. The Congress government, the UPA government for all these years, has not upgraded those biometrics to include the latest cutting-edge technology in biometrics, which I will come to at present. So the present bill seeks to replace and repeal the Identification of Prisoners Act. As I said, that had a limited scope, and in those days, the only measurements were photographs, footprints, and fingerprints. And today, we have much more. In the old days, there was a manual system of filing. So you had photographs of convicts and their fingerprints attached with it. There was a manual system. What this act seeks to do is to replace that outdated manual system with an updated digitalized system. In the old days, it used to be called a rogues gallery because only pictures were there. What my learned friend is asking for is a restriction of that rogues gallery on the basis of those biometrics only in use in 1920, and don't do it. Biometrics have always been in use. You always had to give your fingerprints and your footprints. But the new methods of identifying accused people, criminals, murderers, rapists, and the new methods have all been successful in detecting them. Those methods, for some reason, he finds intrusive. Now, one of his constitutional challenges I have already dealt with. I'll come to a second one now. The second constitutional challenge, the first one I take it is based on Selvi's, which is the right against self-incrimination, Article 23, which is on testimonial compulsion. Is a right of privacy. Now, so the right of privacy is like an unruly horse. If you don't control it, it gallops away. The right of privacy is available to all honest citizens, to people who are not propelled towards crime or have committed crime. Mr. Chidambaram says that the right of privacy should also inure for murderers, rapists, fraudsters, forgers, and terrorists. Why? All that is being done is that a record is being kept of your misdeeds. And there are limitations. It only applies to two categories of persons: convicted criminals and to under trials. Please. It applies to under trials as well. Now, as far as under trials are concerned, there's a clear prescription in the proviso to Section 4
the proviso says that if you are acquitted, if somebody who's arrested but is subsequently arrested or discharged or not sent up for trial, any of these three categories, then the records which were obtained at the time of his arrest will cease. They'll be deleted. They'll be erased from the record. So there is adequate provision for that. Then there is a second. As regards under trial for offences with more than 7 years, so anybody arrested for an offence of more than 7 years, he has the right to protest. In his case, it is only with his consent. For an offence with less than 7 years, the period. So if he is arrested for an offence with less than 7 years, only a compulsory subjection to an examination is ruled out. He has a right to protest and say, my offence is only less than 7 years. I do not want to give this. It is only in the case of arrestees who have been arrested for offences, serious offences, punishable with more than 7 years, does the Act come into operation. Now, so the second constitutional challenge which Mr. Chidambaram pointed out was a violation against privacy. Now, the judgment he referred to is Puttaswamy. If he had read Puttaswamy's judgment properly, he would have realized that that judgment of 9 judges is replete with references that in the case of detection of crime, the right of privacy stands excluded. It has referred to the European Convention, which says that detection of crime is an exception to the right of privacy. But he seems not to have read that part. Now, sir, what are some of these techniques which have been developed? Let me give you an example as to how useful these are and what is sought to be excluded on the grounds of privacy and other. Now, these are very important issues, but they are both misconceived, misplaced, and the Act does not violate those provisions of the Constitution. So, as far as the progress in, one of the progresses that have been made, one of the advances that have been made in biometric development has been iris and retina scans, specifically referred to in the measurement section. Now, please see why the iris scans are better than fingerprints. So nobody says any scan, no biometric can be 100% foolproof. We have used handwriting evidence. We have used signature evidence. We have used other types of evidence, including obtaining of nails, skin, etc. But many cases, that evidence has not stood up. But that doesn't mean that there are not good cases where that evidence will stand up. Many convictions have taken place on the basis of flawed biometrics, and convictions have taken place. Now, sir, see why iris scans. Iris scans are better than fingerprints for identification purposes. A, because they are more detailed and accurate. B, they are more sanitary. C, unlike fingerprints, they do not change from wear and tear. And finally, they are fast to scan and quick to retrieve. Now, sir, when someone's iris is scanned, what happens is a binary code of the image is created. It is this code of about 500 bits of data that is stored in a database. When that person later goes before an iris recognition scanner, the iris scan is measured against the code in the database and identity is authenticated. Now, sir, how fast is this technology evolving? A Carnegie Mellon engineering professor
which is already adopted in the United States, in some states, has recently developed the first long-range iris scanner which can identify if a murderer or a thief runs away in a getaway car from the scene of the offense. A police car chasing him can find out if the driver, if the criminal running away looks at his rear view mirror. The driver behind him of a police car chasing him can, from that very glance in a rear view mirror, find out the identity of the person. Wow. It is that advanced. And members of the opposition would not have that as part of a biometric testing data. And so the retinal scan is even more efficient. It assures the highest level of security, and out of all the biometric measures, the retinal scan is the most reliable biometric authentication system. Retinal scanning is actually used at high-risk centers like airport bases and border patrols. All this we should be using because it will help in detection of crime. Now, sir, since I'm from Maharashtra, I'm particularly bemused by the fact that members of parliament from Maharashtra should be opposing this bill. On the 31st of March, I read an article, and I was highly proud. I was highly proud because it said Maharashtra to be the first state to launch criminals' biometric database. This is what it said: a digital fingerprint and iris scanning system to aid police investigations with a database of 6 lakh people with crime records will be launched by Maharashtra CM Uddhav Thackeray on Saturday. That was supposed to be on the 2nd of April. It was Gudi Padwa Day, New Year. Yes, it is on the 31st of March. Please. Please. Called automated metronomical biometrical identification system, AMBIS. It is a different kind of data digitalization. We have specific data on estimated 6.5 lakh on under trials and convicts. The entire information has been validated by the Bureau of Fingerprint experts. It will help law enforcing agencies track criminals, and that too at lightning speed. How is a government, an Agadi government in Maharashtra, which is about to introduce this database, opposing a bill which has a similar provision for a record, for a database? Mr. Jethmalani. I didn't know, sir, but I'm told by honorable friend, Mr. Chidambaram is also elected for Maharashtra. Mr. Jethmalani, please. Mr. Mahesh Jethmalani, please. आप पीछे से yes, I know, I've heard. Please, Mr. Mahesh Jethmalani, please. There is a point of order, please. 1 minute. I don't like to disturb the member because it breaks the flow, but it is known. So 238 is my point of order, and it is on 238, page 84, part 5, reflect upon the conduct of persons in high authority. Chief Minister of Maharashtra is high authority. Wait, let me finish. Please. Let me finish. Please. Sir. Please. Sir. This is the problem. Please, आप सब. Please. Sir, I would like to ask the honorable. Please. Sir,
Please. It is not whether good, bad, indifferent. I am only sticking to the rules. I don't want to disturb the members. Right, of the right, committee. right, Mr. Derek. Simple. We'll examine. Yes. If you Yes. have a discussion, if you mention, it has to be based on a substantive motion drawn in proper terms. Please, I'm thank you. afraid We'll this examine. is not drawn Please. on proper terms. Please. Substantive Please. motion. Can Thank you, you. why should I want to disturb Thank you. if you're playing? Sir, I am referring to a newspaper report which hasn't been denied, and in fact, in my opinion, contrary to that of the learned member from West Bengal, the conduct of the chief, Please. the conduct Please. of, Please. the Please conduct of the Chief Minister of Maharashtra deserves commendation. I am actually praising him for having the same kind of record in Maharashtra. My learned friend doesn't understand that this is an act of praise on my part, not an act of condemnation. I am saying he should have followed it through. But of course, Please. if you want to defend a rogues gallery, like some members on that side want to do, eloquently arguing, counter-arguing our this statement. But I want to ask him, and here, always in this house, Please. Please. always in this house, we have followed that no papers should be referred. Means whatever statement comes in the paper, Yes. that We'll cannot see. be taken into We'll see, this house. And We'll see it. We'll see. Yes, we'll see. We'll see. sir, Please. my flow will Please. not get disturbed by these kind of interruptions. Please. All I will say, sir, is that, I repeat, the gentleman who I referred to needs condemnation. He was supposed to launch this on the 2nd on Gudi Padwa Day. I am a little surprised. Perhaps it was a case of political opportunism that because we introduced this bill, that launch was stopped. We stole the thunder which he was expecting to deliver, but I don't know. So, sir, also, sir, I wonder whether those opposed to this bill are aware of one more project, and they should be made aware. Because it's all very well to talk on high constitutional provisions. After all, you're a learned lawyer, you're a constitutional expert, you're a one-time minister, but you can't run away from facts. So people are impressed by that kind of a persona. But sir, behind it, there are no facts. Now, sir, there is something called the Crime and Criminal Network Tracking System. And incidentally, there may well be a conflict of interest on Mr. Chidambaram's part to raise this issue in this House, because he stands accused of a crime. I wonder whether those opposed to this bill are aware of CCTNS, Crime and Criminal Network Tracking System, a mission mode project under the National E-Governance Plan of the Government of India. Now, sir, under the aegis of the National Crime Bureau, the same bureau which is going to record data in this case, the same bureau, the National Crime Bureau, 36 states and union territories, as of 25th August 2020, are sharing a pan-India database consisting of precisely the type of records contemplated by this Act. So that there seems to be doublespeak on the part of members of the opposition. There is no unconstitutionality, there is no illegality. It is true that there's a case of disproportionality in the case of the types of persons covered by the Act. There is no point keeping arrestees and serious criminal convicts in the same category as detainees. There I agree and I empathize. And perhaps that is my only criticism of the Act, which I would kindly request the Honorable Home Minister to look into. We don't need to categorize these kinds of people with convicts and under trials. Under trials, acquitted in any case, have a right to have their records established and not to be forgotten. But sir, as far as criminals are concerned, this is a very, very important Act because, sir, crime never dies, A. They have a right to be forgotten. Criminals have a right to be forgotten, but that right will only take place after they die posthumously. Then their records may be erased. Records in this country, by the way, sir, I may just say one more thing. Records in this country can be maintained for 75 years. One honorable member of the Lok Sabha said
that in England, in India, the average age life expectancy is 69. Why have it for 75 years? So I may say that in England, records are preserved for 100 years from the date of birth of the criminal, for 100 years, for much more. And the life expectancy there is 80 years. So there is nothing wrong in having this. So as I said, sir, criminals have a right to their records being erased posthumously, unless, sir, they happen to be unfortunate enough to have their case the subject matter of a law report, in which case their misdeeds will remain forever. Sir, I wholeheartedly support the bill and all its provisions barring one. Thank you. Mani Shri Sukhendu Shekhar Roy. The Honorable LOP said, I think that cannot be a point of order, because newspapers can be referred based on if it falls, if the subject is within the business of the council. What he quoted is exactly the subject matter of the discussion. Therefore, please. Sir, 235. Sir, 235. No, this. Sir, 235. 235, sir. It clearly says, yes, sir, yes, can I read? please. Sir, 238-2. Yes, tell me. 235-2 shall not interrupt any member or shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the council. ये तो the bill का subject है. Please. So the Honorable LOP is wrong, sir. Please. Mani Sukhendu Shekhar Roy, please. Sir, please. Manu Sukhendu Shekhar Roy, please. my time should start Please. from now. Sir, Please. Sir, my time should run from now only. Yes, you speak. Let me submit before this August about the historical background of enactment of the Identification of Prisoners Act 1920. It was in fact in 1915 that the government of Bengal drew attention to two revolutionaries convicted in the Rajya bomb case in Calcutta, who were most persistent in their refusal to be photographed, and as a result thereof, Government of Bengal suggested amendments to the Police Act and the Prisoners Act. And this was how the 1920 Act came into being. But it was done by the colonial rulers to suppress our liberation struggle for the freedom of our motherland. But sir, now after 75 years of independence, after so many sacrifices made by our forefathers, the present rulers have stepped further in the name of developing the criminal justice system to throttle the voice of all those who are opposed to the anti-people policies of this government. This is my first charge against this government so far this bill is concerned. Sir, there cannot be clause-by-clause discussion due to paucity of time. Only 3 hours. I don't know why this draconian bill shall be discussed within 3 hours. Anyway, the government even does not agree to refer the bill to the select committee. The way personal and biological data intended to be collected by force, and the government desires to pass this bill by use of brute majority, is a fascist move, more oppressive than the East India Company rulers. Sir, if this bill is a foolproof of bringing the culprit to book, then why this bill was not referred to standing committee? My second charge against this government insofar this bill is concerned. No, standing committee before the introduction of the bill. Forcible collection of physical and biological samples of arrested persons under trials and those held under preventive laws and convicts are keeping the data for 75 years violate the principles of natural justice. This is my third charge against this government. Sir,
The bill, sir, equality before the law and equal protection of law under Article 14 shall be a myth. If this bill is passed, there shall be denial of protection under Article 20, Clause 3 of the Constitution, which says, and I quote, "No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against him," unquote. But Clause 6.1 of the bill prescribes inter alia for that if a person refuses to allow taking of such measurements, it shall be lawful for the police authorities or the prison officer to take such measurements in such manner as it may be prescribed. It is vague, completely vague. This is against the provisions of Article 20, sub-Article 3 of the Constitution, and such vague and unlimited prescription has the competence to allow the head constable or the head warden to adopt even third-degree method to compel a person by physical torture for taking the measurements. This is my fourth charge. Sir, my fifth charge. The bill also poses danger of DNA profiling of certain communities or groups. Remember, everybody should remember that according to the available data, 60% of under trials in Indian jails belong to the SC, ST, OBC and minority communities. With the effective and extensive use of DNA data in cases, these communities will increasingly suffer the burden of perceived criminalism. Sir, arrested persons or under trial prisoners will be vulnerable in the absence of personal data protection law, which has been pending since 2019, as rightly pointed out by Mr. Chidambaram. The draconian provision of this bill will be considered as part of other measures enacted and implemented by the government for control and surveillance of the people, even after the ruling of the Supreme Court that right to privacy constitutes fundamental right. Therefore, this government has willfully neglected and deliberately failed to show any respect to the judgment of the apex court of the country. Sir, my next charge to this government is that what is the opinion of the scientific community? Has this government taken the opinion of the scientific community about the measurements? The scientific community has raised serious concerns about the foundational validity and the value of many of the measurements covered by this bill and the inadequacy of the legal standards used to assess them. For example, I am giving one example. There is no scientific basis for attributing uniqueness to handwriting samples, which is one of the measurements covered under the bill. Sir, the lack of clarity in the collection and usage of the measurement heightens the possibilities of misuse, particularly of biological samples and their analysis. Sir, the bill presents significant concerns of excessive delegation of legislative authority to the rule-making bodies, as well as excess delegation of power to functionaries under the bill in violation of Article 14 of the Constitution. Sir, these functionaries include police officers at the rank of head constable, magistrates, as well as prison officers. In addition, the bill creates an unreasonable classification between classes of arrestees that may be compelled to give biological samples and those who may not. Several other provisions fail to disclose any adequate determining principle at all and pose grave concerns of manifest arbitrariness. Sir, the bill also fails to meet the fourfold requirement of the doctrine of proportionality laid down in the Justice case, Puttaswamy versus Union of India case. Sir, the absence of demonstrated rational nexus between the legitimate aims of the bill and its coverage of persons who may be compelled to provide their measurements renders the bill an unsuitable means of achieving those aims. Regardless, the provisions of the bill also constitute an unnecessary and disproportionate infringement of the right of privacy. Sir, this bill has wide-ranging implications for the right to privacy, equality, and for the integrity of the investigative process. Sir, before I conclude, I would like to say what is the assessment of the scientific community. One or two bullet points. Sir, so far, Clause 2, 1B of the bill is concerned.
it says about different measurements. I have time left, sir. No, you have 8 minutes. 7 minutes, my time is 8 minutes. Sir, no scientific basis. There is no scientific basis to attribute uniqueness to an individual's writing samples. The identification by footprint impression is an imperfect science, and this alone is insufficient to connect the accused to the crime. No standards for the guiding the examination of fingerprints. Same finger can produce different fingerprints under different circumstances. Sir, no consensus exists when comparing palm impressions, and the analysis is also prone to errors with a high rate of false negativism. Authentication failure at the national level is 8.54%. So I conclude with this, that I oppose this bill, and before that, I would urge upon the government to refer the bill to the select committee. Next speaker, Sri Richi Siva. No, sir. Time. Please. What is your point? Yes, sir. Yes, sir. What? See, my name. Therefore, I am raising this point of order. If the chairman is of the opinion that a word or words that have been used in the debate, they are defamatory, indecent, unparliamentary, or undignified, he may, in his discretion, order they may remove. Sir, no. We will examine it. Examine kara lenge. Examine kara. Please sit down. Sri Richi Siva. Please sit down. We will examine it. Examine kara lenge usko. Please sit down. Please sit down. Sri, please sit down. Please sit down. Please sit down. बैठिए please. Trichy Shivaji. Trichy Shivaji. शांत रहिए please. Mr. Vice Chairman, sir. Please, Susmita ji, please. Trichy ji, please you continue. Mr. Vice Chairman, sir. You continue, please. I stand to oppose this bill, for it is repressive, imperious, and oligarchic in nature. Sir, at the outset, I would urge the government why it should be so hasty to bring this bill and discuss within a constrained time of 3 hours, rather than consulting the stakeholders. That's what our senior colleague and former Home Minister asked here. Why can't you wait for 102 days? Any bill cannot be just rushed through and can be passed with the majority a party may have in the parliament. It should be discussed elaborately. See, our time is squeezed and we have to put forth our views so urgently. So we would urge, we have moved a motion already. So kindly refer it to the select committee, whereas the stakeholders will appear before that and members would also have ample time to express their views, and I think this bill can be brought in later with the necessary amendments. Sir, this bill erodes the fundamental rights of the citizens of this country. Strong implications on the civil liberties and basic human rights. It raises strong questions on the right to life, right to privacy, and the right to live with dignity. This is unconstitutional. Why it is unconstitutional? As everyone pointed out, it is violating Article 14, Article 23, Article 21. See, when the Constitution provides for every person to live with dignity and equality, it takes away all the rights. Sir, the bill, of course, as it is said in the statement of objects and reasons, the purpose of bringing this bill is that measurement techniques being used in advanced countries are giving credible and reliable results and are recognized world over. We accept it. But our concern arises. Before that, I would like to ask, if you are following the world over, you have to think about the right to
the right of forgotten right to be forgotten. See, it is practiced in Argentina, it is in European Union and in Philippines. What is right to be forgotten? Any information, private information about a person be removed from internet searches and other directorate under some circumstances. But here it is not so. The measurements that are collected will be stored for 75 years. Our concern arises and apprehension comes where? When the ambit of person is expanded. When the ambit of measurements is expanded. This is our basic concern. When the ambit of person is expanded, earlier the Prisoners Act 1920 was confined only to the prisoners and of course those who were convicted. But now this is any person. Who are there any person? It's a very, very sensitive and, as I said earlier, sensitive bill. We are afraid. You are armoring yourself with much more draconian laws. Already the UAPA you amended, which declared that even an individual can be identified as a terrorist and can be detained by the NIA. Now what is this going to lead? Everyone has got their own thing. Even a person under preventive detention will be compelled to have measurements. But if the person refuses, automatically what will happen? It shall be lawful for the police officer or prison officer to take such measurements in such manner as may be prescribed. And who is the police officer? As per the bill, a head constable. And who is the prison officer? A head warder. How will he take the measurements? Because the measurements are not just like ordinary fingerprints, finger impressions, palm print or footprint, photographs. It doesn't stop with that. It goes to retina and iris. It goes to biological and physical samples. And also behavioral attitude, including signatures, handwriting. And such other examination